Good evening, good afternoon, everyone. Thank you for joining the second day of the National WASH Conclave, which is happening from 23rd, 24th, and 25th of February. Today, we'll be having breakout sessions on sanitation, water, and hygiene. And I would like to welcome you all to the first session, which is on sanitation. The session, which is on water, I'm sorry. The first session is being moderated by Dr. Sundararajan Krishnan, and the session focuses on sustainable FHTC models for local bodies to deploy in water quality affected locations. Before I hand it over to Dr. Sundararajan, I would like to fill you in with a brief of who Dr. Sundararajan Krishnan is. Dr. Krishnan is the Executive Director of INREM, INREM Foundation. He has studied from prestigious institutions such as IIT Bombay and Stanford University. He has also been a member of Indian Planning Commission 12th Five-Year Plan, working groups for sustainable groundwater management and water database development and management. Dr. Krishnan's work has mainly been in two areas of water harvesting and groundwater management, and in water quality and health. The path-breaking work of reversing fluorosis is something that Dr. Krishnan and INREM is very well known for. Water Health AI is his recent enterprise, working on bringing data, AI, and exponential technologies to solving water and health problems. Thank you so much, Dr. Sundar, for joining us today and for agreeing to moderate this panel on sustainable FHTC models for local bodies in water quality affected locations. Over to you for the session. Thank you. Thank you, Geeta, and to all the organizers here, UNICEF, WaterAid, Jal Jeevan Mission, and so many other partners, and especially to NRDPR, to host this very important WASH conclave. And glad to see that this year it is a pan-India event, and so many enlightening presentations till now. मैं बीच में हिंदी में भी बात करूंगा. यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों की ऑडियंसेस हैं, और मैं थोड़ा बहुत मिक्स करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर मैं ये कोशिश करूंगा कि आप दोनों ऑडियंसेस को थोड़ा समझ आए. So here, we have this great opportunity here in this particular session to focus on one very important area, which is for ensuring that the aim of Jal Jeevan Mission, which is functional household tap connection, FHTC, it happens to each and every person, each and every household in our country in the next couple of years. And this very important area is that the water which reaches is also safe, is potable, and it's acceptable to people, which really means that it's of high water quality, ensured according to the best standards that our country can be proud of. And the last couple of years, there has been tremendous progress in achieving this better water quality, drinking water and water supply reaching to habitations across the country. But as this happens, we are also faced with a lot of different issues. So today, we are lucky to have an audience which is going to expose us to the larger programmatic progress of this program of Jal Jeevan Mission happening in the country. We are going to hear straight from the field on how this is happening, how water quality data and information is being collected. Sometimes subjects such as these are extremely complex. इस तरीके के जो water quality तरीके के बहुत तकनीकी जो subject लोगों को समझ में नहीं आता है ना, तो उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना, और लोगों को इसके साथ कैसे व्यवहारों को बदल के अच्छे पानी के साथ जुड़ना, ये भी हम सुनेंगे यहाँ पर इस सेशन पे. We'll start this session with our august presence of Jal Jeevan Mission Water Quality Director, Mr. Ajay Kumarji, who has kindly agreed, to be here with us and also share with us what is really happening in Jal Jeevan Mission and water quality. After that, we'll have Khileshwari Sahuji, who comes from Chhattisgarh and from the district Rajnandgaon. She is the water quality monitoring and surveillance district officer in the Jal Jeevan Mission team. And she is going to tell us about what is happening over there from the field, what are the issues, what are the concerns, and how they are addressing it in this really tough situation of Rajnandgaon in Chhattisgarh.
That will be followed by a wider perspective on these issues from the water safety planning perspective by a very senior WASH expert in UNICEF, Mr. Nanak San Dasani from the Rajasthan office of UNICEF. And he'll be exposing us to a wider paradigm of how we can bring in water quality, health, behaviors together to achieve sustainability, in water quality affected habitations. We'll then move on to larger issues of data, water quality data and governance with Urmila Chatterjee, a senior economist from the World Bank, who will be putting forward larger issues around data integration over here. And the session as a whole, the presenters will end with bringing out a less talked about but a very important issue of grey water, which Dr. Priyanka Jamwal from A3 will be highlighting. And after that, we'll move to a panel, and I'll talk about the panel and the presenters, Dr. Pawan Lapsetwar, Dr. T.N.B.V. Rao, and Engineer Hemant Kole when we come to that. But now, let us begin with Shri Ajay Kumar ji. Ajay Kumar ji, मैं आपको welcome करता हूँ. Thank you so much, for coming here, and we would like to hear from you about how Jal Jeevan Mission is tackling this challenge of water quality. Thank you so much, Ajay. Good afternoon to all. First, thank you for inviting DDWS for this National WASH Conclave 2022. As we are aware, this clean drinking water, improved sanitation and hygiene lead to better public health, especially children and women who are more vulnerable to these waterborne diseases. And over the year, this drinking water quality issues has emerged a major challenge as groundwater is depleting and our demand is increasing, and this basically our rural area is mainly depend on this groundwater. So this geogenic contaminants, arsenic, fluoride, iron, these are posing serious health hazards if we consumed for prolonged period. And people may not aware that they are drinking arsenic and fluoride water from the ground. So this creates more serious problem to us, that people are not aware that they are drinking arsenic and fluoride, as so many people have their own arrangement that they have made the borewell in their premises and water is not being tested, arsenic they are drinking. So that's creating problem to their health. And this water quality issue has become a shared responsibility now with government, private sector, and people working in this field and community. We all should join hands to combat this problem. In Jal Jeevan Mission, this providing safe water to all the quality affected habitation is one of the priority areas, and ensuring quality of water at all times is critical for this mission, as this quality varies from timings. If concentration, if we go to after monsoon season, the concentration may be less, but in dry season the contaminants concentration may be more. So this geogenic situation also creates more challenge to us. And this water quality monitoring and surveillance, including regular testing and surveillance by FTK kit, and then remedial action of the this contaminated data, that's also this priority, can say, component of JJM. We have taken various initiatives for this public accountability and governance. We have trained 5 women from each and every village, so that they can test using FTK in each and every village. Sample can be tested, and VWSC formation
Pani Samiti formation also in each and every village. So this JJM is basically a community program, and this GP and all, these are utility based. We are trying to that everything is managed by GP as in JJM. And I can share one PPT that what we have done in last 2 years under JJM. Small PPT, 10 to 15 slides, I think. You please share now. You please kindly give us right to share the PPT. I'm requesting the technical team to give permissions to Ajay Kumarji for sharing his presentation. Thank you so much. So this is regarding provision of potable water in quality affected habitations that we are doing under JJM. First is vision of JJM, that every household to have tap water supply in adequate quantity. That quantity is defined under JJM is 55 LPCD. Prescribed quality, that is we have advised for BIS 10500, that on regular basis and long term basis, that what we are doing that must be sustainable for long term. That program is announced by Honorable Prime Minister on 15th August to that every rural household have tap water supply by 2024. This is expected outcomes: improved quality of life, ease of living to the rural people, basically women and girls, reduce waterborne diseases, healthy rural communities, employment opportunity at some, and bridging the urban and rural gap. Urban we have household tap connection, and rural we have to go for taking up water. So this gap will be fulfilled. Next. This is what is change in the JJM from earlier programs. In JJM, stress is on functionality of tap water connection, this regularity, quantity, quality, long-term basis. Second is community ownership. This program is basically for to manage by people, and we are take this. We have as per guideline this 5% and 10% contribution from community, that they may feel that this is their infrastructure. Community ownership, they can feel the ownership of the scheme, and they can manage that. That's their scheme and they have to manage. Delegation, empowerment and capacity building of Gram Panchayat VWSC as to function as a public utility. End-to-end approach. This is from source sustainability, then infrastructure, pipe water infrastructure, grey water use, and O&M. These all are integrated under JJM. In technology front, the all assets we are taking as geotech, Aadhaar linked with household tap connection. If some state are giving household connection, that linkage is with Aadhaar number. Everyone can see from the dashboard that they get connection, and by Aadhaar there is a linkage. And this monitoring of this water quality, service and all that. This is the status: 3.23 crore to 9.06, and color you are seeing that from 0 to 10 so many states were there. Now only few states that both are, that are also in 11 to 25 category, 25% category. And next, 6 states 100%, 100 districts are 100% districts. This blocks and panchayat and villages, and this all detail is public domain. This JJM based dashboard. If you Google only writing this JJM dashboard, this everything comes in front of you. Next. These are the state-wise detail where states are stand. Bigger states are doing well now. This Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, and West Bengal and Rajasthan. They are also coming fast now. Small state have achieved lot. Haryana, Punjab, and all Himachal. They are more than 90%. Next. These are the this regarding
strategy of providing water in the quality affected habitation in the JJM. These are as per guideline. 10% weightage we are giving to the states who have population residing in this quality affected habitation. We have advised state that community water purification plant to be installed in arsenic and fluoride affected habitation immediately as short-term measure. Because this PWS may take time, so we have advised this for this arsenic and fluoride affected habitation. We do regular review for this, expedite that this habitation may get pipe water supply with household connection in these areas, regular quality testing so that people may get prescribed quality water, empowering local community for this FTK testing. And this village with, as per guideline, the village which have adequate groundwater, but quality issues, water to be treated before supply to every home. And if water is not available, water and quality, both issue are there. The bulk water transfer to with the village where quantity and quality exist, means surface water schemes state may plan. These are regarding water quality monitoring and surveillance. We have advised state that minimum all sources to be tested every year, once for chemical and twice for bacteriological contamination. Second is monitoring to be done by PHED and surveillance by local community, the women trained in the village. We are stressing on strengthening the lab infrastructure. We have advised state for accreditation and recognition of all the labs. We have opened all the labs to the public so that any common person can test their water sample in these labs. This we have launched this WQMIS online portal. From the general people can even see which lab is nearby, and this public health engineers, FTK users, for that sample collection, testing, online data dissemination, and this when this contaminated sample is there, the alert is issued to the competent person, XCN and all the XCN and this public health doctors can say also, so that remedial action may be taken up. Sensor based IoT check for water quality, that is in the initial stage. In project pilot basis we are doing this, and later on state may do in each and every water delivery point. We have this one challenge we have done for this portable water device, so that testing can be easy and quickly. This 2% allocation especially for this WQMS activity, up to 2%. We have launched one WQMS monitoring and surveillance framework, wherein this all this detail regarding what is the requirement for what is the, this is regard basically a protocol type things, ki what must be there in the lab, how many staff and all that, and this will be helpful to the lab person basically. Next, this is sensor based IoT. We have installed in pilot basis some places. So herein also this quality is also monitored, quality, quantity, regularity and all that, and data is in front of all from our dashboard also. Next, this is the dashboard of WQMIS monitoring information system, wherein how many sample tested daily, how many villages testing has been done this year. You can see 3.56 lakh villages this water quality testing has been done this year out of 6 lakh villages. FTK testing, there is a data uploading some problems, then data is in 90,000 villages only, and contaminated samples also reporting here. The state may see if this type of thing is happening in their state. And user trained, that is old figure 7.39 lakh
ladies have been trained from nearly 2 lakh villages. This is figure is 9 lakh now. Next. This is regarding reduction of quality affected habitations from start of JJM 57,000 to 35,000. Arsenic, fluoride, iron, every detail is given. Basically these are next. Basically, this is regarding this arsenic affected habitation, decrease in arsenic affected habitation from 2016 we are taken. Now, as reported by state, only 1800 habitation is there, out of which we have installed CWPP also. Next. This is regarding this reducing trend in fluoride affected habitation also. Next. These are the detail of current quality affected habitation in the states. Assam have 14,000 and Rajasthan have 12,000. These are basically iron and salinity affected habitation. And below one is fluoride and arsenic. We have, that is stress, main area of this. So detail we have given. Arsenic, basically West Bengal have more habitation of arsenic affected habitation, 1066. They are working on this. Punjab also 560. They are also working on this. This will be decreased in the end of this year. They are installing CWPP and all that. Private purifier also given. Next. These are contaminant wise. I discussed iron 20,000 habitations, 10,000. Out of 35,000, 30,000 is these habitation. For iron affected habitation, Assam is doing well. That will be decreases in coming months, 6-7 months. And salinity issue, Rajasthan have planned the scheme for surface water. That may take 1 year for implementing the schemes, that bigger schemes for this area, these areas. Next, arsenic and fluoride will be covered. Next. These are the figure that how many habitation have been covered since launch of JJM. These figure, earlier we have this date of cutoff is 1/4, April 1st we a cutoff. These are internal. So many habitation have been covered since launch of JJM, 46,000. Because state may are open, they can declare the habitation in between, declare the habitation and cover the habitation within the year. So that's why this figure is there. Next. This is regarding state-wise detail, which state have done in coverage. Assam, this West Bengal 12,000, Assam 10,000, Rajasthan 6,800 are basically fluoride affected habitations, and others they have installed CWPP and all that in Rajasthan. Next. These are regarding our state's lab network. We are stressing for NABL accreditation. 465 labs so far accredited. This percentage is 23-24%, but state lab is more than 50%. This district level lab and state lab is more than 50%, and so this is the figure. Next. Ajay Kumar So these are the details we are doing under JJM. So thank you so much Ajay Kumar ji, and ये जो वाइड प्रेजेंटेशन आपने जो दिया है जो वाटर क्वालिटी के ऊपर जल जीवन मिशन में जो एक जोर दिया जा रहा है, जो एम्फोसिस दिया जा रहा है, और उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं ना वाटर क्वालिटी के ऊपर. एलोकेशन बढ़ाया गया है, नए टेक्नोलॉजीज ले आते जा रहे हैं, है ना. और इसके अंदर सबसे अच्छा मुझे जो लगा, आपने जो शुरुआत में पूरा एक साथ मिलकर कहा कि वाटर क्वालिटी इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट कंपनीज, एनजीओज, सभी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, बिजनेसेस हैं, सिटीजनरी है, वाइडली कम्युनिटी है, ये हम किस सबकी एक साथ जिम्मेदारी है. और ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो विजिबिलिटी जो बढ़ाया है ना, कि इसकी जो डैशबोर्ड्स एंड डेटा को ओपन अप करते हुए इसमें आपने दिखाया कि जैसे कि लोक भागीदारी के साथ कितने महिलाएं इसमें सामने आ रहे हैं. और सबसे ज्यादा जो इसमें एक नया चीज बोलेंगे जो दिख रहा है वो है कि गांव में कैसे लोग जागृत हो रहे हैं, जो अवेयरनेस की बात आपने शुरू में की, जो वाटर टेस्टिंग करते हुए. थैंक यू सो मच अजय कुमार जी. और आज के जो ये 1.5 घंटे के जो
सेशन पे आपने जो बैकग्राउंड दिए हैं उसी के ऊपर चर्चाएं अभी होंगी। और ये जो लास्ट पॉइंट को मैं शुरू करके नेक्स्ट पार्ट में जाता हूं कि जो लोक भागीदारी को कैसे लाना, महिलाओं को कैसे लाना, और ये जो वाटर टेस्टिंग को लेकर किस तरीके से करना है। पिछले साल में देखेंगे जैसे आपने दिखाया डेटा एंट्री हो रहा है, मगर फिर भी कम से कम 22 लाख टेस्ट गांव से आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 2.2 मिलियन, 22 लाख टेस्ट गांव से आए हैं और अभी भी बहुत कुछ आते जाएंगे। और उसमें से एक बहुत ताजुब की बात है कि छत्तीसगढ़ जैसा एक जो राज्य है वहां से करीब 7-7.5 लाख टेस्ट गांव से आए हैं। तो ये कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से ये किया जा रहा है, और ये जब टेस्ट कर रहे हैं तो क्या उसके बाद क्या उसका परिणाम हो रहा है, ये हम अब जानेंगे। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से खिलेश्वरी जी जो है वो जल जीवन मिशन टीम राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में काम करती हैं, और वो जल जीवन मिशन की एक मैं कहूँ कि एक उदाहरण है कि इस तरीके से बहुत सारे खिलेश्वरी जी हैं जो हर गांव में, हर जिले में काम कर रहे हैं। मैं अभी आमंत्रित करता हूँ खिलेश्वरी जी को, जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट जल जीवन मिशन टीम में। वो आपके किस तरीके से आप छत्तीसगढ़ में जो राजनांदगांव में आप काम कर रहे हैं वाटर क्वालिटी के ऊपर, आपके जो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और उसको आप लोगों के साथ, ग्राम पंचायत के साथ उसको आगे कैसे लेके जा रहे हैं। खिलेश्वरी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही? यस, थैंक यू सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खिलेश्वरी साहू, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ राजनांदगांव जिले से। सर ने अभी काफी कुछ जो है वो ऑलमोस्ट ब्रीफ करके जो मेन मुख्य पॉइंट थे उन्होंने आपके सामने रखे। जेजेएम का उद्देश्य है कि 55 लीटर पानी जो है वो प्रति व्यक्ति के लिए हर घर तक टैप कनेक्शंस के माध्यम से पहुंचाया जाए। तो जो पानी पहुंचाया जा रहा है जेजेएम के थ्रू, सर ने एक और बहुत बढ़िया बात कही कि वो पानी जो है वो क्वालिटी युक्त होना चाहिए। जो पानी पी रहे हैं लोग उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए BIS स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे जितने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और बाकी के जो NGOs हैं वो गांव-गांव में जाकर FTK का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हर एक ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ FTK की ट्रेनिंग देते हैं। FTK की ट्रेनिंग जब हम देते हैं तो गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ साथ ही ग्राम पंचायत के सारे सदस्यों के अलावा गांव के नॉर्मल जन समुदाय को बुलाते हैं। उसमें से लोगों को VWSC मेंबर्स के लिए चुना जाता है। VWSC मेंबर्स में मुख्यतः हम ये चीज ध्यान देते हैं कि महिलाओं को आगे लाते हैं, क्योंकि पानी की जो समस्या है उनसे डेली लाइफ में जब हम देखेंगे तो महिलाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है। पहले पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो उन सारी समस्याओं के लिए हर घर जल में एक गुणवत्ता युक्त जल पहुंचाना बहुत बड़ा हमारा एक उद्देश्य है। VWSC मेंबर्स में हम 5 महिलाओं को चुनते हैं, जिसमें गांव की महिला सरपंच भी हो सकती है, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, या गांव में बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो आगे आने के लिए इच्छुक रहती है। तो उन सक्रिय महिलाओं को भी हम उसमें मेंबर्स के रूप में आगे चुनते हैं। और उनका यूजर जो है, सर ने अभी WQMIS का जो वेबसाइट बताया उसमें यूजर्स एंट्री करते हैं और उन्हीं के नाम पर हर एक गांव के सोर्सेस की टेस्टिंग की जाती है। चूंकि राजनांदगांव जिले की मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, यही के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। जिला जो है वो बहुत बड़ा है, तो केवल मेरे एक कोऑर्डिनेटर के होने से हर एक गांव को यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने खुद FTK का बहुत अच्छे से प्रशिक्षण लिया। साथ ही साथ जो अदर कोऑर्डिनेटर्स हैं, IEC के भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, IACs भी हैं, तो सारे कोऑर्डिनेटर्स को मैंने FTK की ट्रेनिंग दी। सभी कोऑर्डिनेटर्स को अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किया गया। हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, सारे कोऑर्डिनेटर्स को ब्लॉक में डिवाइड कर दिए। हर एक कोऑर्डिनेटर को 2 या 3 ब्लॉक का दायित्व थमाया गया। फिर भी हर एक कोऑर्डिनेटर, जो कि बहुत सारे गांव हैं, 1595 गांव जो है वो राजनांदगांव में है, और एक एक गांव में जाके लोगों को ट्रेन करना है। तो भी जो 6 या 7 कोऑर्डिनेटर्स है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने प्लम्बर्स को भी ट्रेनिंग दी।
कि प्लम्बर्स भी पढ़े लिखे हैं 12th तक, ग्रेजुएशन तक, तो वो आसानी से जो FTK की ट्रेनिंग है, केमिकल्स है, उनको समझ सकते हैं और गांव वालों के साथ आसानी से रखकर BW की SC के मेंबर्स बनाने में बहुत अधिक सहायता कर सकते हैं। तो ये मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि राजनांदगांव जिला में यूजर रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी 112% हो चुका है, 100% क्रॉस है। साथ ही साथ FTK का डिस्ट्रीब्यूशन भी 100% है, सारे ग्राम पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। जो विलेज कवरिंग है, विलेज कवरिंग में 97% है यूजर रजिस्ट्रेशंस में। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जैसे मानपुर का एरिया है, छुई खदान के कुछ एक गांव है, वैसे ही छुरिया के कुछ एक गांव है जो बहुत अधिक नक्सल एरिया में है। कुछ एक गांव तक हम पहुंच पाए, पर फिर भी कुछ एक गांव बच गए हैं जहां हमें अभी पहुंचना है, उसके लिए कोशिश बिल्कुल जारी है। तो वो 3% गांव जो है वो हमें पूरी कोशिश रहेगी कि फरवरी तक कवर कर सके। लैब टेस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो लैब टेस्टिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। विलेज कवरिंग में 71% है और टोटल अगर हम लेबोरेटरी प्रयोगशाला की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 129% जो है वो वाटर की टेस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो सभी की सहभागिता है, किसी एक के करने से नहीं होगा, छोटा हो या फिर बड़ा हो। जल जीवन मिशन, जल ही है तभी कल है, तो जल के होने से ही कल है। तो हम एक मिडिल लेवल से लेकर के बेसिक से उठा करके ऊपर तक जाएंगे, तभी ये संभव है कि हम जल जीवन मिशन के उद्देश्य को 100% पूरा कर पाएंगे। किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय के जिम्मेदारी से ये होना संभव नहीं है। तो हम सब अगर केवल अपना अपना कर्तव्य पूर्ण करें तो ये जरूर हो सकता है कि जो सपना है वो 2024 तक साकार हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू खिलेश्वरी जी। और बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया कि जैसे इतनी मुश्किल जो जगह है वहां पर आप इतने बड़े एरिया में आप लोग कवर करते हैं। और मैं 2 नंबर लेके जा रहा हूँ, 112% और 129%। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि ऐसे कोई कार्यक्रम में जहाँ पे इतना बड़ा चैलेंज है, कोविड के 3 वेव्स आ चुके हैं और आप लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो देश भर को प्रेरित करे। थैंक यू सो मच खिलेश्वरी जी। और ये जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस को सही तरीके से करना, महिलाओं को जो गांव में आप लेके आ रहे हैं उनको साथ मिलाकर वाटर क्वालिटी अवेयरनेस, जैसे अजय कुमार जी ने बताया, फ्लोराइड, आर्सेनिक और बहुत सारे नाइट्रेट, इतने सारे दूषित तत्व हैं पानी में, उसमें लोगों को समझाना और इसके आगे एक नए भविष्य के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये जो आप काम कर रहे हैं वो जल जीवन मिशन को बहुत आगे लेके जाएगा। थैंक यू वेरी मच खिलेश्वरी जी। एंड विद दैट वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस इंस्पायरिंग एग्जांपल ऑफ जल जीवन मिशन इन राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर fascinating work is taking place and taking ahead the goal of Jal Jeevan Mission. We move forward to understand what happens after all this data is generated. I mean, it's great that data is being generated in a participatory manner with community being involved, water quality monitoring and surveillance being acted about in a true form. But then what really happens after this? How do you really trace risk of contamination from the source to the mouth? How do you really reduce health impacts to people? And is there some means, is there some way that all this can be sustained into the long term with Jal Jeevan Mission and even beyond? So does water safety planning offer an answer to us? With that, we move to a very senior person in UNICEF working on wash and water quality issues, Mr. Nanak Sandasani. Thank you very much, Khileshwari ji. And with that, I welcome Nanak Sandasani ji from UNICEF in Rajasthan, जो वाटर सेफ्टी प्लानिंग के बारे में हमको बताएंगे कि किस तरीके से इस अप्रोच से हम वाटर क्वालिटी के प्रॉब्लम्स को हम समझ सकते हैं और स्वास्थ्य के ऊपर जो असर है, हेल्थ के ऊपर जो असर है, उसको कम कर सकते हैं। नानक जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया सेशन आपने मॉडरेट किया, स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे शेयर करने के लिए परमिशन दीजिए ताकि स्क्रीन शेयर करें। टेक टीम, या आई थिंक या यू हैव परमिशन। यस, हाँ दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। यस, डू यू वांट टू डू स्क्रीन शेयर फुल स्क्रीन? बिकॉज़ फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके।
तो फुल स्क्रीन कैसे होगा? मे बी आप टॉप में, ये तो बॉटम में जो फुल स्क्रीन का जो यू हैव अ आइकॉन है ना, कि जो जूम के आसपास जस्ट उसके नेक्स्ट है। यस दैट वन। Yes. यस ठीक है, बड़ी इनबॉक्स है। थैंक यू। आ गया है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत ही अच्छा मुझे अखिलेश्वरी साहब, अजय सर ने जो बताया और उसके बाद ये अखिलेश्वरी ने जो बताया, अखिलेश्वरी ने बहुत अच्छा लगा, और उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और वाटर सेफ्टी प्लानिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ जल जीवन मिशन, व्हाट इज दिस? सो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा और भी एग्जांपल देते हुए थोड़ा बताऊंगा ताकि इसको इजीली समझ में आ जाए। तो वाटर सेफ्टी प्लानिंग जो है उसमें पर्टिकुलरली क्या है कि हाइपोथेसिस क्या है, वाटर सेफ्टी प्लान, वाटर सिक्योरिटी प्लान, ये सब क्या है? तो जस्ट बताने के लिए कि वाटर सिक्योरिटी प्लान जो है वो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ वाटर है, माने वाटर अवेलेबिलिटी, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, उसके बारे में है। वाटर सेफ्टी प्लान जो है वो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, प्राइमरीली माइक्रोबियल रिस्क जो है और केमिकल कंटामिनेशन के बारे में है। तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो प्रायोरिटी जैसे अजय साहब ने भी बताया जेजेएम में कि क्वालिटी, और अखिलेश्वरी जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि पानी की क्वालिटी हमें चाहिए। तो वाटर सिक्योरिटी तो ठीक है, पानी आप जो दे रहे हो वो तो बिल्कुल सही है, साथ साथ में इसको वाटर सेफ्टी माने जो पानी पीना है वो अच्छी तरह से सेफ होना चाहिए, ये बात है। तो वाटर सेफ्टी प्लान का क्या मतलब रहा? तो वाटर सेफ्टी प्लान इज ए प्लान टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर through use of comprehensive risk assessment and risk management approach that encompasses all the steps in water supply from catchment to consumer। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर सेफ्टी प्लान में आप एक सारे रिस्क एसेस करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, सो दैट फ्रॉम कैचमेंट टू कंज्यूमर, माने जो कैचमेंट एरिया से जहां से पानी अपन ड्रॉ करते हैं वहां से लेके जब तक पानी पीते हैं तब तक पानी सेफ कैसे रहे उसके बारे में है। तो ये देखो, तो व्हाट इज वाटर सेफ्टी प्लान? तो ये जो आइडेंटिफाई करता है क्या क्या रिस्क है कैचमेंट से कंज्यूमर तक, और उसको भी प्रायोरिटाइज किया जाता है कि भाई कैसे इसको फोकस किया जाए, हाई रिस्क को पहले किया जाए, उसके बाद लो मीडियर, उसके बाद लो रिस्क को, और इस सारे रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जाए कंट्रोल मेजर्स के साथ। वो करते हुए अपन एश्योर करते हैं कि लास्ट में जो एंड रिजल्ट मिलता है, जो पानी जो लोगों को पहुंचता है एट द कंज्यूमर एंड, बिल्कुल सेफ रहे। तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि लेस आउटपुट मॉनिटरिंग, माने फाइनल वाटर जाके आप चेक करें, उससे ज्यादा इनपुट मॉनिटरिंग, बीच बीच में जो मॉनिटरिंग करने की बात है, सिस्टम बरो ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और जैसे अजय साहब ने भी अच्छा बताया कि मॉनिटरिंग एक पार्ट है मगर सर्वेलेंस का भी इतना ही इंपॉर्टेंस है। तो जैसे वाटर, मैंने आपको ऊपर भी डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि वाटर रिसोर्सेज जो सोर्सेज से लेके उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जाए, उसके बाद कंज्यूमर एंड, ये चारों पहलू में कहीं ना कहीं कंटामिनेशन, सपोज यहाँ से क्लोरिनेटेड वाटर चला गया मगर नीचे पाइप में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं स्टोरेज रिजर्व में कहीं प्रॉब्लम है, एट कंज्यूमर एंड कहीं प्रॉब्लम है, तो वहां तक अपने को देखना है कि पानी उसकी जो कैच माने कंज्यूमर एंड तक जब पानी पीते हैं तब तक सेफ रहे। तो ये जो था कि एक एग्जांपल है, अच्छा ये एग्जांपल है। तो कहने का मतलब देखो, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो बिफोर और आफ्टर, दोनों चीजें देख सकते हो कि पहले जो हैंडपंप का जो चापाकल था वो टूटा हुआ था, पानी उसी में से कंटामिनेटेड नीचे जाता था, और उसको ही ठीक करके आपने देखा राइट साइड में तो कैसे ठीक हो गया और पानी बंद हो गया, तो सीपेज बंद हो गया। और नीचे भी देखो आप, जो टूटा हुआ है उस सॉकेट में नहीं जाता था पानी, उसको ठीक करके सॉकेट में इसको ठीक किया गया। और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आप देख रहे हो, मगर इसको मैं आपको एग्जांपल ये दूंगा जो सही में, ये आपका नॉलेज हो गया, बाकी सही में जो पीएचडी, क्योंकि मैं पीएचडी के दिन याद करता हूँ मेरे गुजरात में जब पीएचडी में था, तो सही में जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ मैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि 112 गांव की योजना थी, और 112 गांव की योजना में मुझे कोई गांव से फोन आया कि भाई बीडीओ साहब का, कि भाई वो यहाँ पानी में मछलियां आ रही है। तो वो बीडीओ साहब जो है वो पानी का बोतल में भर के मछलियां दिखाने के लिए, और डीएम साहब को भी फोन किए, डीएम साहब ने हमें फोन किया कि भाई देखो ये आपकी
योजना था, हमने उसी टाइम बोला कि सर हम पानी में मछलियां नहीं बेचते हैं, पीएचडी मछलियां का काम नहीं बेचना कर रहे हैं, मगर हो सकता है कहीं कंटामिनेशन होता है, देखना पड़ेगा। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन रिलेट, माने रियल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो हमने हमारी टीम को बोला कि साहब अपन तो ये रेसिडुअल क्लोरीन बरोबर मेजर करते हैं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर एलिवेटेड सर्विस रिजर्व, जो वाटर टैंक से, वहां से देख के चालू किया कि हमारा बिल्कुल ठीक था, सब स्टोरेज में भी ठीक था, क्लोरीन भी ठीक था, गांव के एंड माने चलते तक एंट्री तक बिल्कुल भी ठीक था। फिर हमने गांव में अंदर देखा जाके कि भाई कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अब वहां तक भी पानी अपना रेसिडुअल क्लोरीन ठीक दिख रहा है, 0.2 ppm बिल्कुल अच्छे तरह से मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब कि गांव के अंदर किसने कहीं मस्ती की है, तभी जाके कंटामिनेशन हुआ, अदरवाइज कैसे कंटामिनेट हो सकता है। तो वहां से पंप ऑपरेटर को ग्राम सभा में सब बिठा के उसको बोला गया, भाई तुम बताओ कहाँ दिक्कत आई। बोले नहीं नहीं सर कुछ नहीं। तो बोले कि कुछ भी बताओ, ये कुछ गड़बड़ी यही गाँव की हुई है। तो उसने कबूल किया कि सर आपकी बात सही है, यस्टरडे रात को यहाँ एक इलीगल कनेक्शन हुआ था और उसके नीचे काऊ डंग था, तो काऊ डंग में उसमें पानी जरा मिक्स हो गया होगा, तो उसके कारण हुआ। अभी आप सोचो कि कहाँ से कहाँ, अभी पीएचडी माने डेफिनेटली अपना काम करती है अच्छी तरह से, मगर कहाँ कम्युनिटी और माने अवेयरनेस नहीं होने के कारण कितना रिफ्लेक्ट आ गया। फिर मैंने वीडियो साहब को कहा, मैंने बोला अभी कौन अकाउंटेबल है। आपने मेरे 112 गांव में थ्रू दिस कंटामिनेशन आपने स्प्रेड किया, नाउ आई वुड बी हेल्डिंग यू अकाउंटेबल। डीएम साहब को फोन किया, बोले साहब देखो कौन करता है मस्ती, देखो। तो द पॉइंट हियर आई एम मेकिंग कि वाटर सेफ्टी प्लानिंग इज ऑलरेडी माने एक नीड ऑफ द आवर वो है, मगर अभी कब, जब ये मैं स्लाइड, और क्योंकि प्रेजेंटेशन 10 मिनट में करना था और स्लाइड्स काफी थी मगर मैंने काट लिया। तो पॉइंट ये है कि आउटब्रेक तो हम सुनते रहते हैं कि भाई ये आउटब्रेक हो गया, ये हो गया, और उस टाइम आपको जब भी मालूम होगा तो पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुला देंगे और हेल्थ वालों को जाओ अब चेक करो। मगर ये आउटब्रेक ही न हो, वैसा क्यों नहीं सोच सकते। तो इसके बारे में ये है। अच्छा, उसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ कि कहाँ मिस है। जैसे मेरे को नेदरलैंड जाने का मौका मिला था, तो नेदरलैंड्स में मैंने देखा, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हम जा रहे थे वाटर सप्लाई सिस्टम देखने के लिए। अभी ये भी रियल एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे माने कितना फर्क है, वो आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ जब हम एंटर कर रहे थे वाटर सप्लाई सिस्टम देखने के लिए, तो जैसे एयरपोर्ट में अपना सिक्योरिटी चेक कैसे होता है, ऐसा सिक्योरिटी चेक हो रहा था। हमने उनको पूछा यार ये क्या बात है, इतना सिक्योरिटी चेक करने के क्या मतलब है। बोले साहब इंडिया में चलता होगा, क्योंकि यहाँ तो पानी ये हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वी कैन नॉट, माने आपको थोड़ा भी उसमें संशय नहीं होना चाहिए, कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो गई तो पानी हम सप्लाई दे रहे हैं। तो आप देखो कितना एडवांस है, और क्यों हम नहीं सोच सकते ऐसा। हमारे यहाँ पीएचडी ने अपना जो टैंक्स हैं, ये जनरली प्रॉब्लम क्या आ रहा है, और जैसे ये हमने क्योंकि गुजरात में भी काम किया बड़ल साहब के मेंटरशिप में, तो वही बात, ओनरशिप किसकी होनी चाहिए, गांव की होनी। ये टंकी किसकी है, ये पानी की पाइपलाइन किसकी है, ये पीएचडी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी है, तभी जाके फर्क आएगा। अच्छा, अभी ये बात करते ये चापाकल को देखते हुए मुझे अभी राजस्थान का रिसेंट एग्जाम्पल याद आया वाटर सेफ्टी प्लानिंग का। जब हम पीएस साहब को मिले कि भाई वाटर सेफ्टी प्लानिंग सर अभी इसको पीएचडी में करना चाहिए, और 2017-18 में से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी काफी लेटर्स आए थे, तो उन्होंने बोला ये वाटर सेफ्टी प्लान यार ठीक है, मगर आप नीचे जमीन पे करके दिखाओ क्या चीज है। तो ये भी रियल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये 2017 का चित्रोड़ी गांव का एग्जाम्पल है राजस्थान का। उसमें हुआ क्या कि 100 गर्ल्स थे और उसमें 19 चापाकल थे। तो 19 चापाकल माने हैंडपंप्स का जो हमने क्वालिटी चेक किया, तो उसमें एक में फ्लोराइड निकला, वो तो उनको मिटिगेशन के लिए बता दिया। बाकी बैक्टीरियल कंटामिनेशन कहीं नहीं था, पानी सेफ था, माने हैंडपंप तक पानी सेफ था। अच्छा, हमने फिर हाउस होल्ड को चेक किया, तो हाउस होल्ड में क्या पाया कि 60% ऑफ द वाटर सैंपल फाउंड इन हाउस होल्ड वेर कंटामिनेटेड, माने वो दूषित पाए गए 60%। अभी आप सोचो कि पानी पीएचडी ने तो साफ दिया, सेफ दिया, मगर वहां से लेके चापाकल से लेके घर जाने में कहीं गड़बड़ी हुई और उन्होंने ये 60% फिट नहीं थे। तो तुरंत ही हमारे एससी साहब जो थे, तुरंत ही बोले देखो भाई अभी हमारा तो दोष नहीं है। मैंने उनको तुरंत ही बोला, मैंने बोला सर बिल्कुल आपका वैसे दोष नहीं है, मगर आप कैसे अकाउंटेबल हो वो मैं बताता हूँ, ताकि जो हमें आईईसी का पैसा जाता है, एचआरडी का आईईसी का पैसा क्यों जाता है, वो अवेयरनेस जनरेशन के लिए जाता है। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये जो आप यहाँ से लेके गड़े में पानी ले जाते हो,
वो भी अगर ठीक नहीं किया, घड़ा धोआ नहीं, हाथ साफ नहीं रखा, वापस अंदर डाला, अच्छा घर पे जाके भी अगर उसको रख रखाव ठीक नहीं है, उसमें लेडल नहीं यूज किया और लोगों ने गंदा हाथ अंदर डाला, तो पानी अनसेफ होना ही है। और ये जब स्टोरी हमने पीएस साहब को जब बड़ा हमारा वर्कशॉप हुआ स्टेट में, तो वो बहुत खुश हो गए, बोले अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तो मैं ये जरूर कह रहा हूँ जेजेएम में जब अपन कर रहे हैं तो ये बात जरूर है कि वाटर क्वालिटी कैसे करना चाहिए, और वाटर सेप्टिक प्लानिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप फॉर एश्योरिंग सेफ वाटर है एज डिजायर्ड बाय जेजेएम। तो ये हमें देखना पड़ेगा, उसको अपने को करना पड़ेगा। तो ये मैंने जस्ट आपको उदाहरण दिया, और विथ आई थिंक कि अगर हम सब कोलैबोरेटिवली साथ में करेंगे तो इसको हम जरूर इसको कर सकते हैं। अब क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लंबा है, इसलिए मैं जस्ट शॉर्ट में, क्योंकि मुझे बताया गया 10 मिनट बात करना है, इसलिए मैंने अभी रखा है। अभी जैसे आगे जरूर पड़ गई, मैं उसमें और विस्तार से बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स नानक जी। और जो आपने बिहेवियर्स के जो टॉपिक यहाँ पर लेकर आए हैं वाटर सेफ्टी प्लानिंग के जरिए, कि फाइनली इट इज ऑल्सो अबाउट बिहेवियर्स ऑफ पीपल, व्यवहारों की एक समस्या भी है कि जो कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, परसेप्शंस के साथ जुड़ा हुआ है, एंड स्पेशली अगर इस चीज को हमको कन्वर्ट करना है टू रिजल्ट्स, देन लॉन्ग टर्म इट्स अबाउट बिहेवियर्स। और ये बिहेवियर्स इज नॉट जस्ट बिहेवियर्स ऑफ कम्युनिटी बट बिहेवियर्स, जैसे अजय जी ने कहा, जैसे खिलेश ने, हम सभी के जो व्यवहारों की जो एक हमको बदलना है सोच भी, कि किस तरीके से हम साथ आए इन इश्यूज के ऊपर। और ये जो कम्युनिकेशन जो जरूरी है, जो डेटा जनरेट हुआ है, जैसे खिलेश्वनी जी ने कहा, जो लाखों डेटा पॉइंट्स जो जनरेट हो रहा है, वो डेटा पॉइंट्स की जो कम्युनिकेशन है, लोगों तक पहुंचे, सभी तक पहुंचे और एक्शन लिए जाए, जो आपने दिखाया, वो बहुत अहम है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, डेटा टू पीपल, डेटा टू इंजीनियर्स, डेटा टू ऑल स्टेक होल्डर्स, ये कम्युनिकेशन सिर्फ लोगों के बीच में नहीं, मगर हम ये अभी देखते आ रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन तो डेटा और डेटा के बीच में भी होना चाहिए, क्योंकि पीएचडी लैब से डेटा जनरेट हो रहा है, कम्युनिटी से डेटा जनरेट हो रहा है। मगर जैसे हम अभी नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर उर्मिला चैटर्जी, जो सीनियर इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक में, उनसे हम लोग जानेंगे कि डेटा टू डेटा कम्युनिकेशन, यानी बिटवीन डेटा सिस्टम्स क्या कम्युनिकेशन है, are they really talking with each other, and are we really able to make sense in the larger picture of, let us say, one single issue such as bacterial contamination, as you spoke about, Nanakji, or nitrate, right? And a larger issue of governance of data systems, water quality data systems, is what I'm going to invite Dr. Urmila Chatterjee. Thank you so much, Nanakji, which provides a setting to the next two speakers, and inviting Dr. Urmila Chatterjee, senior economist with the World Bank in India, and beginning to do wonderful work in this subject on water quality data governance. Over to you, Urmila ji. Thank you, Sundar. Good afternoon, good evening, everyone. It's an honor to be part of this discussion, a very fascinating discussion so far. I will say at the outset that I am an economist by training, so it's a bit daunting to present something in a room full of experts, but I'm here to learn from you all, but also offer a user's perspective, particularly on water quality data. We are leading this analytical program in the World Bank, trying to understand what is the state of water quality in India. Is it good here? Is it good? Is it bad there? What are some of the drivers? What are the costs of poor water quality, and what can be done about it? So data is a very important ingredient to answering some of these very important questions. So I'm here to offer that perspective. But I'm also here to offer the perspective of someone who's in my previous worked closely with both national and federal governments on data systems and statistical reform, because I think there's a very large and exciting agenda to explore when it comes to water quality data. So Sundar, I shared a presentation at the very last minute. I don't know if you can project that, or if you want me to project. Can you go ahead, Urmila? You can go ahead and project it. I can share my screen? Yeah, you can share, yeah. I hope you have the permissions. Yeah, you have the permission. Thank you so much. Okay. Let me just change the settings. Can everybody see the presentation? Yes, we can see it, but it's still not full screen, but we can see your presentation. Yes. Can you
tell me where I can make it full screen, please? The bottom, if you go to the, now I don't, yeah, now we see it on full screen, yeah. Excellent, okay. Thank you. So I have divided my presentation into 3 parts, and I'll try to be quick because we have 10 minutes. And I really want to end with posing some questions and food for thought that we can discuss later. So the first is just a quick idea of what we are doing. As I mentioned, we are trying to ask this important question of what do we know about groundwater quality in India? What are its drivers and the cost of poor water quality? And as you can imagine, this is a very challenging, complex issue, right? There are challenges to begin with on data, but also with regard to methodology and interpretation. Up till recently, one relied heavily on the central groundwater quality data work. But recently JJM has made available so much data, like hundreds and thousands of units of observations that take you very close to almost the household. So it's given us a lot of hope to answer some of these questions that we would like to. But having said that, there are some challenges, and I'd like to use this session to highlight them from the perspective of trying to find some solutions. So I think the biggest challenge as a user is that data tends to be scattered across different agencies, right? You have up to like 4 agencies that have data on water quality in the public domain. The Central Groundwater Board, you have, of course, JJM for rural, and then you have the Central Pollution Control Board that has some data, and then the state DDWS departments or the PhD departments have data. So for a user who doesn't understand this landscape, it's not clear where do we go, right? So it's really important that we try and come up with an harmonized integrated database. And that's what we're trying to do in the India Bank program, which is to create this harmonized database, which would like to make public as a public good. But this is easier said than done because it's massive amounts of data. There are issues of harmonization, but it can be done, right? But through this process, we came to know a few things when it comes to, what different agencies do in terms of sampling, in terms of methodology. And I think it raises questions, broader questions, more macro questions about data governance architecture. And another important thing is, it's extremely important that you have a mix of skills when you're trying to use this data. For example, as an economist, I would just take nitrate data from Central Groundwater Board as well as JJM without realizing that one only includes shallow wells and the other includes all wells, and these things matter. So what we've tried to do in our team is to have a combination of all kinds of skills. We have groundwater specialists, hydrologists, data scientists, economists, and we are very happy that Dr. Sundar is also helping us in this effort. So this is what we're trying to do. Let me just quickly share what we're finding. This is very preliminary work, and it's based on what is just available in the public domain, right? We need to still go deeper. And then what Ms. Sahu was talking about is extremely interesting to know, right? She's giving the really ground perspective of things. So next, what I want to just give you a snapshot of what we are finding, just to illustrate and generate a discussion. So for example, if you compare the spatial maps of nitrate exceedances, 2008, using the Central Groundwater Board data and JJM, when you look at the map, yes, by and large, there is a coincidence, right? For the northwestern part of India, barring, I think, South India, you find that there is decent correlation, right? So here, the way you interpret is the orange and red colors say that there's more nitrate in those places, than relative to the other colors. However, if you were to go more granular, the block or village level, you have very low correlation, right, between data sets. So this is an issue of, depending on what data set you use, you may end up with completely different conclusions about the state of water quality in a particular area. But this is kind of expected, right? Because different agencies follow different approaches when it comes to data collections, right? There is, for example, Central Groundwater Board sample sizes tend to be small, whereas JJM is huge, right? It's very spatially granular.
So when you want to look at something at the block level, which data set do you go to, right? How do you aggregate the JJM data set? So, some of these differences are natural, there's also differences in reference period, in spatial coverage. While JJM is excellent, it gives you village level information. What about urban areas, right? Particularly the tier 2 cities. Where do we get information in terms of granular information on water quality there? There's also other differences which are highlighted too in terms of how the data is collected, what parameters are covered. So I think it's important to understand that there are these differences that can be explained, but also ask questions that do these differences need to exist, right? Some of it may be, but some of it may not be, right? So for example, if you look at the JJM itself, right, it's fabulous. There's a lot of data that's being collected and a lot of effort that's being put in, as outlined by Director Kumar and others, right? But when you look at the data set, based on what's available in the public domain, you find a lot of the data is missing, right? So for example, these are the rows highlighted in row. Arsenic, huge sample size, but 90% you have no values, right? Similarly, you see this with many other contaminants. So it's a question of why is this happening? Is it the data is not collected, or is collected and not uploaded, or collected or not made available in the public domain? All kinds of questions that a user will ask, right? But also this table raises another question, right? Do we need to collect data on 20 parameters everywhere? Can we move to a more risk-based approach when it comes to collecting water data quality? Given that we already have so much data, can that inform us a more risk-based models or approach towards what we measure? Another thing is that, again, within JJM, this is meant for illustration, and it's a provocative title, data rich or data poor. We just compared for Punjab, the data collected by the regional advanced labs and the district labs. And again, they're not exactly telling you the same thing. So what is going on here, right? So we need to understand this better because you will end up concluding very different things based on what you look at. Anyway, so I think I highlighted several of the issues, but I hope we can view this humongous effort that's taking place in installing systems, in human infrastructure, in ICT infrastructure to collect water data quality monitoring is also an opportunity to think about some other issues that may have not got that much attention, right? So firstly, yes, it seems to suggest what we are doing, that there are potentially issues of quality and reliability. We need to dig deeper on this, right? But many of the differences, at least between the data sets, can be explained by just the fact that they follow different methodologies when it comes to sampling, etc. But also we could potentially explain differences within an agency data because of certain factors. But how much of that is desirable versus something that one should review? So that's a question, right? But also on this larger institutional governance aspects, there's so much data that's being generated. Who is responsible for that, right? Who's responsible for ensuring that quality standards are met, that there is, enough investment in human and other capacity going forward. So given that we now have a Apex ministry, maybe it's time to think about a data steward, a data officer for water quality, right? What is the role of Central Groundwater Board versus JJM versus CB in all of this? So I think there is an opportunity here to dig a little deeper in some of these governance issues. Otherwise, we end up, so much effort generating so much data, but then how much of it will be used, right? Ultimately, our goal is that this data is used and there's action and ultimately communities benefit. So let me stop here. This is just ongoing work, and we really hope to dig deeper into some of these issues, go to a few locations, understand what are some of the reasons why we are finding these differences. But I just wanted to offer you a glimpse of what we are doing.
And we're really looking forward to your feedback and ideas on how to think about these issues going forward. Thank you very much. Thanks so much, Urmila. And I'm sure that, there are going to be so many questions on people's minds, in this audience. And I mean, we'll wait for the questions and we'll pass it over to you. I think it throws up a whole lot of different approaches and, ways to think about water quality data, even beyond JJM, right? Because there's a lot other also happening. Thanks so much, Urmila. And this is very less spoken about, what you spoke about here. And we'll end the presentation part, of this water quality section and then move to the panel. And very important presentation which is coming up now, which is a topic which Ajay Kumar ji spoke about, as Jal Jeevan Mission is really paying attention to. But very often when we talk about water quality and water quality data, it's mostly about water quality of the supplied water. But I speak with engineers across the country and they tell me that, look, that's not the issue we are grappling with. It's a totally different issue. The water which is coming out of homes, the used water, the wastewater, the water, grey water which is coming out of houses, that's going to be the next big water quality issue. And we have Dr. Priyanka Jambal here working with A-Tree in Bangalore, doing fascinating work over here. And we'll get a glimpse on what they're doing and how we can start thinking about reused water or used water, I would say, wastewater, grey water, I mean, all these different words for the same thing. Welcome, Priyanka, and waiting to, learn from you on this thing. First of all, I would like to thank you, Sundar, for inviting me for this panel discussion. Such a fascinating talks since I have joined this session. So I will make my presentation. I hope I can share my screen. And I would like to present both in Hindi and English, because I can understand that there are participants who would like to understand these concepts in Hindi. So yeah, so I will do that. Let me start my presentation quickly. Sundar, can you see my screen? I can see your screen, yeah. Thank you. Yeah. So जैसा कि आपने अभी पहले सुना बाकी पैनलिस्ट ने और उर्मिला जी ने भी, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के ड्राइवर्स क्या हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. Why it is important to know what are the factors which are leading to ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन is क्योंकि हम लोगों के पास या हमारी संस्थाओं के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. इन द सेंस वी हैव लिमिटेड मनी. तो अगर हमें पता हो कि कौन सा सोर्स कंटेमिनेट कर रहा है ग्राउंड वाटर को, तो वी कैन फोकस आवर रिसोर्सेज टू एड्रेस दैट ड्राइवर rather than addressing multiple drivers and then which will lead to not having a significant impact on water quality. तो जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ या फ्रेमवर्क ये बता रही हूँ कि हम जब बात करते हैं रिसोर्सेज की, हम बात कर रहे हैं सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की. नाउ देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर क्वालिटी को. आपका पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो फर्टिलाइजर्स, जो किसान, जो फार्मर्स हैं, जो खेतों में अप्लाई करते हैं, दैट ऑल्सो लीड्स टू सरफेस वाटर एंड फाइनली इट पर्कुलेट्स एंड ऑल्सो लीड टू ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन. देन ऑन-साइट सैनिटेशन सिस्टम. नाउ ये बात कोई नई नहीं है, ये कोई नया रिसर्च नहीं है जो ये बताता है कि जब हम सोक अवे पिट्स यूज करते हैं जिसमें प्रॉपर लाइनिंग नहीं होती है, इट कैन लीड टू बोथ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर कंटेमिनेशन. देन लाइवस्टॉक्स. देयर हैज बीन सेवरल रिसर्च. अगर आप कोई भी अच्छा जर्नल में से पेपर उठा के देख लें तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जो लाइफ स्टॉक्स है दे ऑल्सो सिग्निफिकेंटली, देयर वेस्ट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर कंटेमिनेशन. और अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया हो कावेरी हॉल में जो कि सैनिटेशन पर था, तो उसमें एक स्पीकर ने ये बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये देखा कि जब बारिशें होती हैं तो जो लाइफ स्टॉक वेस्ट होता है और वो बहुत ही ज्यादा पूरा बह के उनकी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स में आ जाता है, जो कि फाइनली सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को लीड करता है. तो लाइफ स्टॉक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मैंने देखा है कि अभी इतना उस पर फोकस नहीं है. और बाकी है जो अगला है वो है डायरेक्ट डिस्चार्ज. जब मैं डायरेक्ट डिस्चार्ज की बात कर रही हूँ
तो मैं बेसिकली ग्रे वाटर के बारे में बात कर रही हूँ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रे वाटर, वेस्ट वाटर हैज टू स्ट्रीम्स. अगर आप किसी भी गांव के हाउस होल्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सोक अवे पिट्स हैं जहाँ पे ब्लैक वाटर जो फीकल स्लज है वो जाता है, and then you have grey water which is coming out from kitchen and bathrooms. तो अभी क्या हो रहा है कि जो ग्रे वाटर है वो डायरेक्टली हमारी ओपन स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स में चला जा रहा है. तो उससे क्या होता है कि हमारी जो ओपन स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है. तो ये मैं आपको एक स्लाइड बता रही हूँ जो हमने काम किया था. एक पेरियबन एरिया है बेंगलोर के पास, मैं बेंगलोर से आती है, जहाँ पे हमें ये देखना था कि जब स्वच्छ भारत अभियान आया और जब स्वच्छ भारत के अंदर सारे लोगों ने और सारे हाउस होल्ड्स ने सोक अवे पिट्स बनाए तो सरफेस वाटर क्वालिटी को क्या हुआ. तो हमने ये देखा कि फीकल कॉलिफॉर्म्स लेवल बहुत ज्यादा हो गए. आप देखिए तो बीओडी जो है आपकी 80 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच गई, जबकि हम अगर स्टैंडर्ड देखेंगे तो इट इज 3 मिलीग्राम पर लीटर सरफेस वाटर बॉडीज के लिए. फिर हमने ये भी देखा कि आप ये फोटो देख सकते हैं, उसमें आप देखिए कि छोटी छोटी जो पाइप्स हैं डायरेक्ट डिस्चार्ज हो रहा है, और ये जो पाइप्स हैं डायरेक्ट डिस्चार्ज करके स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स में जा रहा है, और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स जो है वो फर्दर आपका जो लेक है और जो आपके ग्राउंड वाटर है उनको कंटेमिनेट कर रहा है. So this particular slide also shows you, so what we have done is we have also picked up water samples from the borewells which were located close to the storm water drain, and what we have found that these particular borewells, they have high levels of organic matter and high levels of fecal coliforms, which is very very interesting to find that grey water can also lead to percolation into borewells, adjacent borewells, and then it leads to contamination. और ये पर्टिकुलर स्लाइड आपको दिखा रहा है, ब्लैक डॉट्स आपको दिखा रहे हैं सोक अवे पिट्स की लोकेशन, एंड देन यू कैन सी दैट हाई डेंसिटी सोक पिट्स आल्सो लीड्स टू हाई नाइट्रेट लेवल्स इन बोरवेल वाटर. सो बेसिकली इन स्लाइड से, इस स्टडीज से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक तरफ वी आर trying to manage black water but through soak away pits, but given that soak away pits are not engineered pits, basically they are just dug and they are not lined. As a result, that is leading to high level of nitrates in drinking water, which is basically affecting our goal of providing clean drinking water to everyone, basically water security of the resource. तो इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जेम्स हटन इंस्टीट्यूट और स्कॉटिश गवर्नमेंट ने फंड किया था, और वो था कि क्या हम ऐसा कोई पायलट बना सकते हैं जो कि वेस्ट वाटर इश्यूज स्कूल लेवल पे एड्रेस कर सकता है, और ये चीज जो है हम कम्युनिटी लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं. और ऐसे पायलट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि द रीजन व्हाई वी आर अनेबल टू स्केल अप दीज सॉल्यूशंस is that we don't have enough evidence coming from the field that these systems, they can work and they can provide good effluent quality which can be reused or which can be put into surface water bodies. तो अभी आप देखेंगे कि हमने ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने इम्प्लीमेंट किया एक स्कूल में जो बेरम्बाडी जिले में है, विच इज वेरी क्लोज टू मैसूर. तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन वेस्ट वाटर के सोर्सेज है. एक तो हैंड वॉश वाटर जहाँ पे बच्चे जाके हाथ धोते हैं दिन में 3 बार, और किचन वाटर जहाँ पे खाना बनता है. तो अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में दे प्रोवाइड फूड ड्यूरिंग लंच. तो हमने देखा कि किचन वाटर भी है और ब्लैक वाटर जो टॉयलेट से आता है. तो जब हमने फील्ड विजिट किया तो हमने देखा कि सारा पानी जो है, ग्रे वाटर जो है, वो आइदर बच्चों का जो प्ले ग्राउंड है वहां पे फैल जाता है, तो आप ये देख सकते हैं नीचे वाला एरो, या तो वो जो ओपन स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स है वहां पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, मच्छर, stagnant water. It leads to lot of health issues and aesthetically it's not pleasing कि आप स्कूल एंटर कर रहे हैं और एंट्रेंस से पहले आप देख रहे हैं कि एक नाली है जिसमें पूरा कचरा पानी है. It's not aesthetically also very good. तो हमने क्या किया, हमने एक डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम वहां पे डिप्लॉय किया. ना ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट मैं आपको सिर्फ बहुत आसान तरीकों में बता रही हूँ कि हमने क्या किया. जब हम उस जगह पे गए तो हमको ये भी पता चला कि मैसूर के आसपास के इलाकों में ग्राउंड वाटर एक तो कंटेमिनेट होता जा रहा है, प्लस उसका लेवल काफी कम होता जा रहा है. तो हमने ये बोला कि क्या हम ग्रे वाटर
को ट्रीट करें ताकि वो ताकि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम जो है, जो वाटर स्केर्सिटी हो रही है उसको इंप्रूव कर सके, लाइक वाटर स्कूल के लिए सिक्योर कर सकें, ताकि समर सीजन में जब पानी ना हो तब रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज कर सके। फिर हमने, क्योंकि जब हम वहां पे गए तो वहां पे सोक अवे पिट्स थे जो कि अगेन लीचिंग होके इट वाज कंटेमिनेटिंग देयर हैंड पंप्स। तो हमने बेसलाइन सर्वे भी किया गांव का, और हमें ये पता चला कि जो हैंड पंप्स का क्वालिटी है उसमें आपको फीकल कॉलीफॉर्म भी मिलेंगे, नाइट्रेट्स भी मिलेंगे, जो कि डेटा मैंने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया। और फिर हमने कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड भी डाला, क्योंकि आपका सेप्टिक टैंक से जो पानी आता है वो उसकी इतनी क्वालिटी नहीं होती कि आप उसको एग्रीकल्चर के लिए या आप उसको ओपन वाटर बॉडीज में छोड़ दें। तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड डिप्लॉय करना पड़ता है, जो कि एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और आई थिंक ये सबको पता है कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 देखें तो उसमें एक मेजर पॉइंट है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट the projects which we deploy they are sustained। क्योंकि अभी क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, we leave, and after that time, like once we are there things function, but once we leave the project like the whatever interventions we have made, they cease to function। तो इस project में we made sure that community is engaged from the beginning of the project। और उसमें हमने स्कूल के बच्चों से भी पूछा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि देखो कम्युनिटी एंगेजमेंट के बाद ही ओनरशिप आता है। अगर आपको कम्युनिटी को शुरू में इन्वॉल्व नहीं करेंगे और फिर बाद में आप बोलोगे कि आप ओनर हो, दैट डजंट sound not sound, but I don't think, as my personal experiences, that is how we should move forward। engagement would lead to ownership। तो इस प्रोजेक्ट में हमने यही किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रे वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमने एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन ही किया, जिसमें हमने कुछ नहीं, सिर्फ कोर्स फिल्टर, फाइन फिल्टर और सैंड फिल्टर लगाया। उसमें हमने देखा कि पानी की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई। और मैं डेटा के डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट water met the urban reuse standards when we used just a very simple method of filtration to address grey water, to treat grey water which is coming out from kitchen and hand wash area, because of course the levels of BOD and COD are quite low। और आप देखिए सेप्टिक टैंक के बाद हमने कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड लगाया, और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड में आप ये देख रहे होंगे कि एक साइड में प्लांट्स हैं, एक साइड में प्लांट्स नहीं है। क्योंकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट था तो हमने प्लांट्स की इंपॉर्टेंस देखनी थी कि वेदर प्लांट्स आर मेकिंग एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ट्रीटमेंट एफिशिएंसी। तो उसके अंतर्गत हमने पेपर पब्लिश किए। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द क्वालिटी ऑफ एफ्लुएंट व्हिच वी गॉट was meeting the discharge standards which is required to discharge your water into open water bodies। So इस पर्टिकुलर काम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जब हम वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं, JJM में इसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। JJM की गाइडेंस बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही अच्छी है, जिसमें वो बताया गया है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। सैनिटरी सर्विस की भी बात की है, बट वहाँ पे कुछ लूप होल्स हैं। मुझे लगता है कि अगर उन गैप्स को फिक्स किया जाए तो वो चीजें बेहतर बन सकती हैं। जैसे लाइफ स्टॉक की बात नहीं की गई है या फर्टिलाइजर्स की बात नहीं की गई है, अगर हम उनको भी लेके आए तो उससे हमारा ये ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। दूसरा, decentralized wastewater treatments have a huge potential to address these issues। और ये मैं आपको पायलट स्टडीज या इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू बता रही हूँ कि डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अगर हम इस तरह से कम्युनिटी लेवल पे भी करें तो दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल इन एड्रेसिंग वाटर क्वालिटी इश्यूज एंड इम्प्रूविंग वाटर सिक्योरिटी एट कम्युनिटी लेवल। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये चीजें स्केल अप इसलिए नहीं हो रही, इंटरवेंशन स्केल अप इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं आ रहा फील्ड से, हमारे पास इनफ पायलट स्टडीज नहीं है जिससे जो गवर्नमेंट है, जो पंचायत्स हैं, उनको भरोसा हो कि एक बार हम ये सिस्टम लगाएंगे तो ये डिलीवर करेगा ट्रीटेड वाटर। तो इन एरियाज में अगर हम काम करें तो वी कैन डेफिनेटली एड्रेस ग्रे वाटर ट्रीटमेंट इश्यूज एंड वी कैन डेफिनेटली move towards improving water security of our water resources। Thank you so much। I hope I met the time requirements। Thanks। Yes, thank you so much, Dr. Priyanka ji, and then you have highlighted like a critical area of the future, present and also the future in rural areas। बहुत सारा पानी जब पहुंच रहा है तो इसकी जरूरत बढ़ती जाएगी।
And what you have done, I think more people will get belief in it. जैसे आपने कहा कि जो evidence है, लोगों को विश्वास बढ़ता जाएगा कि ये हो सकता है ना, और इससे जो root causes है पानी को दूषित होने से, उसको हटा सकते हैं. Thank you very much, Priyanka ji. And then we have 15 minutes to go for the next session. So right time for the panel here. So quickly, I would like to invite the panelists here. We have a wonderful, set of people. We have the three panelists here. I'm introducing Dr. Pawan Lapsetwar, who is a very senior scientist heading the Water Technology Division in NEERI in Nagpur. We have Dr. T.N.B.B. Rao, a very senior person from the industry, having worked in a lot of different companies and now working on cutting-edge innovation, advising International Center for Clean Water in IT Chennai. And we have Engineer Hemant Kolespe, who is Superintendent and Engineer of Water Quality Monitoring and Surveillance from West Bengal government. So without spending more time, I would like to come across to Dr. Pawan Lapsetwar. Dr. Pawan, is my voice coming across to you? Sundaram sir, may I leave? Yes, yes, sure, Sundar. sure. Okay, Sure. thank you. So I'll not be able to put on my video because I'm traveling. I'm in Gadcholi district, so I'll keep it off. Okay. That's okay. That's okay, Pawan. Pawan, you would have heard. I mean, probably Ajay ji, who was here, Dr. Ajay Kumar ji, from Director of Water Quality and Jal Jeevan Mission. He was talking about, the WQMS platform, and finally, you have been working on this for the past couple of decades, and data now being really visible, coming out from ground. Yes, many different issues as Dr. Urmila Chatterjee spoke about. But then, what do you really feel about it? How are you feeling? Are you feeling hopeful about Panchayats actually really being able to utilize data, not just being data producers, but also being users of this data to bring about change? What is your feeling about all this happening in Jal Jeevan Mission? Yeah, thanks, Sundar. I agree that some excellent work has been done, and I recall my association with the ministry 15 years back also, and we had to really push people to monitor water quality. And I feel that the major impetus to water quality monitoring has been given by this uniform drinking water quality monitoring protocol produced by ministry then in 2013. And we are really given a good outline that how the labs can be established, what are the parameters to be monitored, what should be the staff strength, when should we monitor. So that really helped. And then we are very happy to know that many laboratories are getting accredited. Yeah, but when we talk specifically about, say, use of FTK, and it has also been emphasized, and I'm sure that we are trying to evolve many techniques which can actually strengthen FTK, say application of FTK. It was really heartening to note the speech of lady from Rajnandgaon district. And she's really a role model that how can we make say people at grassroots to know more about water quality, and at the same time we can even use water quality data to improve water quality in household. So I'll just take 1 minute to describe a study we have done along with IIT Kanpur. And we have done this close to Kanpur. It was a cluster randomized controlled trial, and we have chosen 600 households in 10 villages. And we have chosen 3 different arms. In one arm, we have simply given a message to household about water management. How can we have water management? Second arm was that we collected water sample and simply communicated to them what the water quality is, what E. coli level in water is. And third, we use presence absence test kit, and we ask community to monitor that. And we actually visited these sites after one month, and the results were not surprising. Where we simply communicated the message, there was in fact more E. coli contamination. Whereas when we communicated the result to the household, okay, there was improvement in not only in water quality but even in behavior of handling water. And third was very interesting, in which we found that there was 76% reduction in E. coli count. At the same time, people were using soap, they were treating their water, and some of them were actually boiling water. So what it actually means is that unless we involve community
and then use these scientific tools to properly communicate to them, I think we are achieving the goal. I would have been really happy to note these results from Khileshwari ji about Rajnandgaon. So it's what we need to do from say a scientific and academic background. I think we have to come out from silos and see really handhold these people, so that these studies which we simply use for publishing paper will be of really good use to these people. One more thing I would like to highlight is citizen science. I think we are focusing on citizen and they're really responding well. Now we have to really bring the science component to citizen, and these studies which you have done and other studies which others are also doing academically, I think are of great use. So I think few recommendation. One is I'm really concerned about the quality of FTK kits we are using. I think a simple audit needs to be done, and there's several published studies, and we also published about H2S vial, how positive, how say false positive and false negative results we get. Second, I think we still focus more on, say, chemical contaminants, although I know that there are many emerging contaminants, but we forget that, say, microbiological contamination is really, really very bad. And then if you talk in terms of disease burden, that should be our priority. And I'm sure that JJM is really doing a great job in providing piped water supply to each household. But you know that this will still be an intermittent water supply, and then there comes the role of water contamination. And I'm sure by providing intermittent water supply, we will still not get, say, microbiological safe water. You have to see that how best we can involve citizen, and the type of studies we have undertaken can help. One more thing, I think, which Nanaji also talked about, the utilization and data of data. And I think the lady from World Bank also spoke about the data which are getting generated in 22 lakh sources. So our study indicate that how good and bad the data is. We have seen habitations where the fluoride was less than 1 mg per liter. We've still gone ahead and installed defluoridation plants. So are we really judiciously using the data? We really look back and see that how can we optimize our resources? One last point is that we are still hesitant to use sanitary surveillance and water safety plan tools. I don't know, world over, even small countries like Sri Lanka, Maldives, Bhutan, Nepal, they are really highlighting the studies they do in which the water quality data getting generated are being used to not only treat water, but even prevent contamination of water. I think we have to really go ahead and then start implementing this water safety plan, but our focus should be community. Wonderful so thanks points, a lot, Pawan. Wonderful points. And pathogen matters, really matters. And we are seeing this theme this month, on pathogen really matters. You rightly put it across. And a very important point about data being generated by people, really bringing change of behaviors. And that really brings me across to Dr. Rao, wonderful work that he and ICCW are doing 10 years into the future, Dr. Rao. And imagine that we have a digital twin for every village in India, on water quality. Now, how does that, let us say 2030, and you have all these things happening, the future, that you're working on, and we're all going to watch, what you're working. What does that mean for Gram Panchayats, and people and community? How are they going to be part of this entire digital transformation of water and water quality data? Yeah, good afternoon to all of you. Dr. Sundar, thank you very much for giving me the opportunity to participate in this. You're welcome. So, with respect to drinking water quality, see, at present we are using many of the places we are using the field test kits. But field test kits, all of you know that for microbiology, the minimum detection limits and false reporting, false data coming out. So all those things are there in with the field test kits. But with respect to sensors, like IoT, Internet of Things are going on nowadays, and many of the community water plants, they are already using this IoT-based water quality monitoring, and also the systems which they provide in the field, and they can see from the office, and all those aspects are going on. And at ICCW also, people are already developing the sensor-based contaminant monitoring systems. Like suppose if you take contamination point of view, it is a microbiology, and the other side is a chemical contamination. When you come to the microbiology, in Indian condition, many of the water treatment plants, whether they are giving the microbiologically safe water or not,
to monitor that, it is very difficult. We have to send the sample in a sterilized bottle to the laboratory where they do MPN test, most probable number test. Then that takes minimum 24 hours to 48 hours to get the result. By the time people will be consuming the water. So there is a need for developing a sensor-based monitoring in many of the places, but there are some companies which are already doing that. But in fact, these are not affordable at an affordable price at this stage. And also some people already developed sensitive test kits for test sensors for microbiological contamination. So other point of view is the chemical contamination. When you take chemical contamination, other speakers also spoke of fluoride, nitrate, arsenic, lead, and also other emerging contaminants are there in the list. But how sensitive are these tests? What by using a probe? At present, if you see, the sensors mainly used is pH, TDS, and sometimes in chlorine, sometimes the fluoride. So these are the main sensors people are using. But it is in a development stage, and some of the community water plants, they are already using these probes, and it is required to make use of these probes in the community water distribution lines, where we can monitor these chemical contaminants, whether all the chemical contaminants and also microbiological contaminants. And it is very useful by using IoT based, because we can generate a lot of data, and after that data analytics also is very important, like which area, what contaminant is there, and how much frequency those contaminants are coming out, whether microbiological or chemical. So all those aspects can be monitored. So in this aspect, what I would like to say is still in the development stage, this IoT based water quality monitoring is still in IoT, it is still in the progress. But how the panchayats will be getting benefited out of this? Suppose if we develop these sensors, sensitive sensors, and if they are affordable, then we can use all those things at various places in different villages. All those things can be monitored by centralized system, and also give a suggestions to the panchayats. Panchayats generally, they may not be able to directly take action or collect the data, but panchayats can be helped by using all these things. And as you mentioned, 2030, definitely there is a chance to develop these test kits or test sensors, and it will be in use by that time. Great to see hear that, Dr. Rao, and hopeful, for the future. But coming back to the present, and Engineer Hemant Kole from West Bengal, coming to you last. I mean, panchayats, Jalabandhus, NGOs running labs at such a scale. We all keep hearing about West Bengal. I mean, what is your message to the rest of the country? Your 10-year experiment on, mobilizing, thousands of people in villages, testing water, getting citizenry to interact on water, and bringing them into the common system of labs. I mean, this is the holy grail for every other state. How are you doing it in your brief message to the rest of the country? Good afternoon, everybody. For the last 10 years, we are testing water sample from the rural Bengal through the Jal Bandhu engaged by the Panchayat Pradhan, and they are the local representative for Panchayat or rural village representative to the PHTC implementing agency of water supply scheme. So what they perform in the field, they first take the sanitary survey of the source and the household, take sample and bring it to the laboratory, and the lab personnel tested it, and if they find any unacceptable parameter regarding microbiological contamination, microbiological and chemical contamination, immediately they transmit the results through the Jal Bandhu to the Pradhan or the PHTC to redress the issue for microbiological contamination. As Santa Suri sir from Rajasthan shows the poor platform of a spot source.
Hemantada, you have last 1 minute before it will go off live. So you have brief last message, from West Bengal, for Jal Jeevan Mission. So from the every house, every villages, we have a representative from this village who involve for the participation of the all villages and try to change their behavior for good water practices, sanitation practices, and hygiene practices, so we can implement the wash and water safety measures. Thank you so much, Hemantada. And then I'm sure that, a lot of people would like to reach out to you to learn more about Jalabandhus across West Bengal and how they have been working for the last 10 years, on this entire system. Yeah, that's a big achievement, and of all of you, in the system who have been able to do this. And a last concluding remark about, the message from all the panelists on Gram Panchayats and empowerment and water quality. Nanak ji, please, from UNICEF. Yeah, thank you very much. Actually, it was wonderful discussion from panelists, also recommendation. I would say from UNICEF point of view and all of our panelists that SDG is the way out, safe water access. So for that, there's a need of collaborative efforts. And we have to work together for all these three aspects, enabling environment, demand side, and supply side. So to make this access to safe water possible through all the collaborative efforts. Suppose in the demand side, communities should be demanding access to safe water, drinking water advocacy community strategies available. So we have to change the behaviors. From supply side, we have to change the mindset of the PhD engineers just as a public health experts. And enabling environment, punitive action should be made a provision in the Water Act to that utilities should be assure access to safe water. And last not but the least, we should come as a united platform to make India disease free. This is my hope. Thank you very much. Very well said, Nanakji, and I thank all the presenters, all the panelists, and especially, the organizers here, Jal Jeevan Mission, UNICEF, WaterAid, and all the organizations, and all of you participants, who have been listening so eagerly, for all this time. I'm sure they have thrown up a lot of questions, right? Whole lot of questions that has thrown up, and whole lot of hope, I believe, for all of you, that this is a big challenge, but we are on a way to really solving it in our country. Thank you so much for all your attention, and I'm sure that you'll stay back for the other sessions over here. Thank you. Thank you so much, Dr. Sundar and all the panelists. It gives me immense pleasure to actually inform that there were around 500 active participants listening to this session through the platform. And we did get a lot of positive comments and also some questions. Hopefully they will all reach out to you individually, or you'll meet them sometime at the work. Thank you so much. With this, we are closing this panel and we'll be moving to the next panel on sanitation. Thank you.